On VHF, you want to perform dual watch. Dual watch mean keeping watch with the priority channel 16 while keeping watch on other channels by time sharing basis. That is automatic watch on priority channel 16 with the another watch. Okay, other than channel 16. That is called dual watch. And triple watch means keeping watch with the priority channel 16 with another two four channels. Okay, that is triple watch. Dual watch के लिए why it is given? It is the IMO requirement. Why let's see all ships should keep watch on VHF channel 16 continuously. Night channel 70 watch. Channel 70 having a dedicated watch receiver, but channel 16 do not have any dedicated watch receiver. You have the VHF. Why let's see you if possible keep watch on 16 continuously. इसलिए जब भी आपको अनदर चैनल पे भी इंतजार करना है देन बेटर गो फॉर डुअल वॉच. तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द अनदर चैनल on which you want to keep watch other than 16 also. Then you come to the dual watch function, select the dual watch and start the watch on. Then it is dual watch. In this model, say we want to keep watch on 6/8. Then you bring the channel 6/8 first. In this model. Then you go to the menu, setup menu, more setup. Then in the setup, first option is radio setup. In the radio setup, watch mode. Come to the watch mode. You check it is dual, then leave it. Otherwise, if not dual, you go to the edit mode and make it dual. Then come out from the screen. Clear? Then use the dual watch function. Now it is keeping watch 68 and 16. It means it is with the time sharing basis. The priority channel lesser time, that is quarter seconds. Triple watch. Go to triple watch. You stop the ongoing process. Then you go to the setup, come to the mode, watch mode, and change it to triple. Then use the next key, come to the call channel setup. You change the call channel other than 16, other than current channel. Set the call channel other than 16, other than current channel. Just to make it, say it is 06. Clear? Then you come out. Now you perform the watch. What is happening? Current channel, priority channel, and 6. Clear हो गया? Current channel, priority channel, and 6. Again you stop it. Clear है? Yes, sir. Scanning. For scanning you need the scan function. You bring the scan function. Go to the scan function. Then which channel you want to perform watch other than 16, you just select those channels. Say you want to perform watch on 68, tag the channel. Then you want the 71, tag the channel. Then 77, tag the channel. Then say it is 09, tag the channel. So 4 channel you have selected. Now you perform the watch. It is, look how many channels are there? 9, 68, 71, 77. Total 4 channels. Then 60 is always there because if it is VHF, on VHF, why let's see you should keep watch on 60. फिर आपको 4 चैनल छोड़ के वो एक एक्स्ट्रा चैनल जो है 16 always will be there. ठीक है? You are keeping watch on 4 channels, but in between 2 channel change, you are also listening to 16. This is scanning. Clear? Stop it. Stop. अच्छा इसका कैंसिलेशन कैसे? हाउ वी कैन कैंसिल द टैग? फिल्टर आउट द चैनल जिसमें टैग लगा है उसको अनटैग कर दीजिए. अगेन स्टार्ट, स्टॉप टैग. ठीक है, जैसे स्टार्ट और कोई नहीं है. ठीक है,
stop, then you come out. The next MFHA. अच्छा, जब भी आप MFHA ऑन करेंगे RF gen always full, ये full हो गया देखा है? नहीं तो ये कम है, ये full है. Then use the AF gen as per your need. Next you want to, अच्छा पहले आपको जानना है MFHF में चैनल क्या है. VHF का तो चैनल 2 डिजिट का है, 0001 से 88. MFHF का चैनल क्या है? You come to the channels, page number 39. Look, on MF it is 2 megahertz band. The marine frequency is mainly in 2 megahertz band and then 3 megahertz band, 2 and 3. So 2 megahertz band channel band number is 2, and then channel number 2 digit ka like your VHF 00. Then total 3 digit for a single digit band like 2, 4, 6, 8. Band number is single digit. Then channel number 2 digit. So for 2, 4, 6, 8 megahertz band channel number complete with of 3 digit. जैसे कि ये 200 से 205, we can note down this channel. 200 से 205, these 6 channels are intership radio telephone working channel, simplex, all are single frequency. Then 241 से जो भी है all are duplex. तो in this way आप देखिए up to 296, 2 megahertz band completed. Then it starts from 4 megahertz channel number 1. Again 6 megahertz channel number 1 like this 601. 8 megahertz channel number 1 801 in this way. But when it is 2 digit band 12, 16, it is like this 4 digit का channel number complete. 1201 means channel number 01 in 12 megahertz band. क्लियर है? सही है चैनल. कभी कभी आपको जब क्वेश्चन देखेंगे कि सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन आरटी व्हाट दे आर चैनल नंबर 412 1205 is indicated, then you need to use that channel number instead of frequency 1205 like this. 1205 is this international channel. Clear? So how you can do this? So this is the MFHF channel. Okay. Then you come to the radio. You decide if the examiner asks you perform a scan on MFH SSB, and if he do not give you any channel, then you yourself assume any 4 channel and then you tag it. Clear? तो any 4 चैनल याद रखने के लिए एक स्टाइल है कि सीक्वेंस में जाइए. आइदर सेम बैंड चैनल नंबर 01, 02, 03, 04 or the same channel number 05 band 2, 4, 6, 8. कोई एक तरीका अपना लीजिएगा. क्लियर है? और सबसे अच्छा होगा पेपर में लिख के रखिएगा आप क्या चैनल सिलेक्ट किया था. देन यू गो टू द स्कैन फंक्शन इन द MFHF in the USSB. Go to the scan. Then you first recall the channel. What? Like 205. Wait, it is accepted. Tag. Then again channel 405. Just you wait. Tag. Channel 605. Just wait. Tag. Channel 805. Wait. Change tag. तो 4 चैनल आप कॉल किया, देन टैग किया. नाउ यू सबको बोल दिया दौड़ो, तो एक लाइन में दौड़ेगा, उसका लेवल नजर में आएगा कि दे आर कीपिंग वॉच. इसमें कोई चैनल 16 या VHF जैसा ऑप्शन नहीं है. 4 चैनल सिलेक्ट किया, 4 ही चैनल है क्योंकि इसमें ओल्ड डे में 2182 में वॉच कीपिंग मैंडेटरी था. वायलेट सी अभी 2182 का वॉच कीपिंग नो नीड. क्लियर है? Only MFDSC watch keeping is enough. So this is scanning. Stop के लिए PTT दबाने से stop, नहीं तो stop से stop. अभी इसको अनटैग करना है. It is important. इसीलिए filter दबाना है. Channel 405 में टैग लगाया है. Then you untag it.
स्टार्ट स्टॉप 805 में है, अनटैग स्टार्ट स्टॉप इसमें है, अनटैग स्टार्ट, अभी एक ही बचा है, ठीक है, अनटैग क्लियर हो गया, सब अनटैग हो गया, देन काम आउट। ओके, टेस्ट मालूम है हमें पीछे का ट्रांसमीटर टेस्ट, transmitter test without real transmission. It is using inbuilt cell test, either a single band or multi band. अभी current frequency is 3560. If you go for the single band test, then it will perform the test on this frequency. कहाँ से? Again it is from the setup and diagnostic. Find out setup. Go to setup main function. Then you go to diagnostic function. Setup, then use this next key 7 times. You can bring the diagnostic function. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diagnostic function. In diagnostic function, you have 2 options. So, 3 options, but you have to select self test. Self test, push, multi-band, single band. Say it is single band. First single band. Push. It is asking you start the test on this 3560. Yes, start. It is going on different level पे, ठीक है, test completed, come out, you select multi-band, then all 6 band 2 4 6 8 12 16 will be tested other than distress frequency, like 2182 है distress frequency, ये टेस्ट करेगा 2185 इन दिस वे, ठीक है, जो भी है 3 किलो आज ऐड करके एडिशनल ऐड करके दूसरा फ्रीक्वेंसी में टेस्ट होगा। यस, स्टार्ट ऑन फ्रॉम 2185 पे टेस्ट, 2182 प्लस 3 क्या हो गया 2185 ऑटोमेटिक। देन यस स्टार्ट, इट इज मल्टी फ्रीक्वेंसी मल्टी बैंड, इसलिए पूछता है श्योर, यस नाउ इट इज गोइंग ऑन 2185। इसके बाद आएगा 4125 प्लस 3, then 6218, 12293, 8294, ये ऑटोमेटिक, एंड 16423, ये सब ऑटोमेटिकली होगा अदर देन डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? टेस्ट कंप्लीटेड, यू कम आउट, अगेन कम आउट, यू वांट टू सी द लॉग, ये प्रिंट नहीं होगा, लॉग है, यस लॉग, मल्टी बैंड का टेस्ट रिजल्ट, दिस इज द टेस्ट रिजल्ट 2185, then 4128, 6218, 8294, 12293, 16423, all test fast. Exit. You want to see the single band test result, this is the single band test result. तो यही है HF transmitter test, transmission test, RT transmitter test without real transmission. क्लियर है? VHF में है नहीं, VHF में खाली DSC का जो सेल्फ टेस्ट है वही है, एंड वीकली टेस्ट तो दोनों में ही होता है, MF HF में VHF, यही इतना ही है। और सर और बैटरी फ्लक्चुएशन दिखाइए ना। हाँ, बैटरी फ्लक्चुएशन, बैटरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑन लोड में, रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ सप्लाई, सर ने नहीं दिखाया? और दिखाया, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इसमें प्रॉपर आएगा क्या? इसमें दिखाता है DC पावर फेल। हाँ, अभी कंसोल में GMDS कंसोल, कंसोल, Come to the, this is battery alarm panel first, this is the battery alarm panel, ठीक है। इसमें अभी क्या है, ये चार्जर इज ऑन, AC सप्लाई इज ऑन, एंड DC स्टेटस में कुछ इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया है। अभी बैटरी चार्जर को देखना, ये है अभी द अलार्म पैनल में बैटरी सिलेक्टेड फॉर नंबर 1 बैंक, बैटरी 1, मेन पावर 26.8 वोल्ट, बैटरी 2 it is not yet fully charged, 24.7 volt, you again select this, next go to the charger,
This is the battery charger and the indication. This number one battery is fully charged 100%. Otherwise 75, 50, 20. These are the indications. It is charged. Put of the charger. जब ये load test होता है, put of the charger, come out. You check charger off. Clear? Use the number 2 battery, it is 24.7. Number 1, it is 26.8. If you go for the equipment like VHF, if you use the stem, clear? It is actually AC. But before that, you must Power switch off the AC. Main feeder. Main feeder is off. AC off. Oh. Alarm is there. Clear? You go to the VHF. Use this. This is the on-load test. Clear? Right? In the meantime, you check the battery voltage. Where? Battery alarm. This is 24 volt. कम हो गया ना 26 से. Okay. Now charger off. AC fails. Our equipment is running from the battery. This is the indication. Go to the next. Again, you put the charger on. It is कितना है 75%. 25% डाउन हो गया. समझ गए? तो दूसरा बैटरी में आना है. ये अभी चल जाएगा 26 हो जाए थोड़ा बाद. Just you go. अभी तक AC आया नहीं है. Go to the main feeder. Put it on. Now 220 volt is restored. Again you come back to the battery alarm panel. Now it is charging. Charging voltage is coming here 26.7. Now it is this. इसके पास रखेंगे तो after some time it will be increased to 26 volt. So this is the charging. Another these are feeder switch. If you put up any switch like VHF, what is happening? Go to the VHF. अब नहीं क्योंकि AC DC कन्वर्टर से चालू है. ठीक है. But if you go to the main feeder switch board, you put it off. अभी VHF ऑन हो गया. समझ गए? लेकिन दोनों में से एक ऑन है. The equipment is running. तो फिर कहाँ आता है मेन फीडर? Put it on. Come to the VHF. Put it on. Again you come to reserve feeder. Put it on. Main feeder. Put it off. Go to the equipment. ये बंद हो जाता है. ये होना नहीं चाहिए. रिजर्व से चलना चाहिए ना सर. ओ मेन फीडर में जिसका रिजर्व सोर्स से चलना चाहिए नहीं होता. इसका प्रोग्रामिंग एरर क्या है? क्या है VHF? क्या है मेन पावर? VHF का मेन पावर ऑफ करेगा तो इनपुट में AC है DC है, आउटपुट में ऑलवेज DC होगा. AC ऑफ है, DC तो ऑफ नहीं है. मेन फीडर क्या है? रिजर्व फीडर DC VHF तो रनिंग. ये मिस्टेक है. ये है ऐसे ही सब एक एक करके टेस्ट होता है. क्लियर है? यस. ये ऑफ कर देगा तो चार्जर इज ऑफ. दिस इज चार्जर इज ऑफ. Supply is coming to the charger for battery charge.